क्या आपको पता है समर्स में बियर्ड रखने से और भी गर्मी लगती है या फिर फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट बदलने से हेयर ग्रोथ हो सकती है? क्या आप भी ना मानते हैं? पीपल यूजुअली हैव मिसकंसेप्शंस अबाउट देयर हेयर एंड बियर्ड। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां सब यही कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो बियर्ड ग्रो हो जाएगी या फिर हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। बट आर दीज ऑल फैक्ट्स और मिथ्स? वेल, लेट्स क्लियर आउट टुडे। Hello, I'm Arpit and I'm here to put away 8 hair and beard related myths and tell you the truth behind them. Number 1 myth is head को शेव करने से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है या फिर हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। The truth is that a shaved head will not affect your hair growth cycle. डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे हेयर ग्रोथ या फिर हेयर हमारे बॉडी सेल्स डिसाइड करते हैं। आप शेव कर लो, दोबारा वैसे बाल वापस आ जाएंगे। Here comes the second myth that men don't need a conditioner, क्योंकि इससे बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। But conditioner do more than that. They nourish your hair and are actually very beneficial. So apply them often. People believe that washing your hair every day keeps it clean, but ऐसा नहीं है। रोज हेयर वॉश करने से हेयर फॉल हो सकता है। ओवर शैम्पूइंग बालों को कमजोर बना देते हैं। It is advisable to wash your hair 2-3 times a week. Next men hair myth is actually quite interesting. That masturbation leads to hair fall. लोगों को लगता है कि masturbate करने से वो प्रोटीन लॉस होता है जिससे बालों को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। Well, there is no scientific evidence to prove it. So yes, it's again a hair fall myth. The next misconception is actually related to beard. That गर्मियों में beard और भी ज़्यादा गर्मी देती है, but it's quite the opposite. Beard protect your skin from the sun and keeps you cooler, like your own mini AC. I'm sure you have heard men saying beards are itchy and irritating, but उनकी choice है कि उन्हें beard रखनी है या फिर नहीं. But the truth is that a bad beard maintenance can make it itchy. Every man should shampoo and condition their beards. Even beard growth oil can promote good health. The commonly held belief is that all parts of your beard grow at the same rate. सबका सिस्टम अलग वर्क करता है। Usually chin के around beard जल्दी आती है as compared to cheek area. There is nothing wrong with that. थोड़ी trimming and shaping से fully grown beard आ सकती है। Lastly, beard growth products are all a scam. They are just useless. ऐसा नहीं है। Every beard deserves a good massage with the right product, like beard growth oil. Now that all these hair fall and beard related myths are busted, here is what you can do at your home for your hair and beard health. Homemade remedies काफी help कर सकती हैं, so here you go. First, protein intake is definitely important. इससे बाल स्ट्रॉन्ग होंगे और काफी सारी हेयर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। दाल, एग्स, पनीर कुछ भी खा सकते हैं। सेकेंड, फोकस ऑन योर बायोटिन इंटेक। सो बायोटिन एक विटामिन है जो बालों को हेल्दी बनाता है। You can find it naturally in food items like oats, sweet potatoes and nuts. Third, massage your beard with beard oil for 2 to 3 minutes. इससे blood circulation increase होगा। Fourth, hair fall control करने के लिए जोजोबा oil use कर सकते हैं। It can help in growing your hair and make it softer. Fifth, if you are facing a lot of dandruff, then try applying haldi and dahi on your hair once a week. Keep the mix on your hair for at least 15 minutes before washing it. That's it for today. I hope you found this video informative. If yes, then like, share and subscribe to Satthwa's YouTube channel. Tap the bell icon to never miss any updates. Goodbye handsome people. Take care of your beard and hair.